Sir, Cos? I think -1/2. No. Sir, Cos. I think √3/2. Now cos 330 is in which quadrant? Sir, fourth quadrant. It is in fourth quadrant, so it can not be negative. It should be positive because cos is Positive in the fourth quadrant. fourth quadrant. And whenever you have 360, if you are using this relationship, cos will remain cos. So it is plus cos 30, which Cos is 30. Root 3 by root 3 2. by 2. Or Sir, alternatively, you can do in a different way. You can also do this way, cos of 270 plus 60, which is still in which quadrant? um, Fourth quadrant fourth only. quadrant. Fourth quadrant, sir. So it will be positive again. Okay. So because it is positive, I'll write plus. And whenever you have 270 or 90, cos will become sine and sine will become Cos. cos. So it is sine 60. So it is still plus root 3 by 2. Clear? Sir, that's what I did, √3/2, but the answer is -1/2. Okay, we'll correct the key in that question. Any And other? sir, 1 second. uh, Yeah, tell me. sir, what's the value of log 5 to the base 10? Log 5 to the base 10. I told you to remember certain values, right? Yes, sir. Log to the base 2, log to the base 3, log to the base 7. Sir, Remember? I remembered it. It was 0.6990. Yeah, yeah. Sir, it's wrong in the answers. It's 0.3010. So I think there is error in the key. Hmm. I'll show you one thing. Let me just check. So give me 1 second. I'll show you the paper. So I'll just share the paper with you here. Yeah. Is the screen visible? No, sir. No, sir. Give me a second. Okay. Now is the screen visible? What was your question number? Tell me. Sir, question number 12, I guess. Question number 12. So this is question number 12. So this was the paper I gave. I think the technician uh, had an error in making the key. So log 5 to the base 10 is 0.6990. Can you see? Yes, sir. Okay. What else? What was Um, the previous question? You asked the doubt for cos of question 9, sir. Question 9. was cos of 330, right? So it is root 3 by 2. Can you see? Yes, sir. Yeah. What else? Sir, question number 28. I have Question some doubt. number 28. Question number 28. Yeah. So it is derivative of x power n. It's the n x power n minus 1. I think I made a mistake here. So here it should be uh, N option. minus Yeah. nx option. n minus 1. Yeah. So that we'll get it corrected. Anything else? Um, Sir, how will we solve question 35? Question 35. Question 35. So this is e power 10, right? Can anyone tell me what is e power 10? 9 e power Sir, 8. e power 10 x No, no, no. E power 10 है क्या? वो एक Constant. and x कांस्टेंट है. Nine constant. e power 8. E power 10 एक कांस्टेंट है.
So Yes. तो कोई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आप कोई भी कांस्टेंट का निकालो, कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप फाइंड करो. What will you get the integral as? E power 10x. X constant. It is x into that constant, right? Yes, sir. For example 10 का अगर निकालना है अपने इंटीग्रल तो आएगा आपको 10x. अगर कुछ और √2 का निकाला आपने तो आएगा आपको √2x. और इंटीग्रल आपने पाई का निकाला तो आएगा आपको πx प्लस c प्लस c प्लस c. ओके. सिमिलरली e का निकाला आपने तो क्या आएगा, e इंटू एक्स आएगा, है क्या नहीं? ई स्क्वायर का निकाला तो क्या आएगा आपको, ई स्क्वायर एक्स आएगा. ई पावर 10 था ना क्वेश्चन में, तो आएगा ई पावर 10x. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Okay. Now this is different. E power x dx is different. E power x dx का e power x आएगा, ठीक है. x power n is different. x power n का क्या आएगा? X power X to n. the n plus 1 divided by n plus 1. Okay. But 10 power n का क्या आएगा? 10 power n x plus c. Are you getting my point? Yes, sir. So never get confused. Never get confused with a constant to a variable. Okay. अगर constant है तो कुछ भी रहने दो, वो उसका इंटीग्रल that constant into x ही होगा, ठीक है. For example 1 by x का क्या आएगा? ln x Natural आएगा. log. Log. Okay. But 1 by 10 का क्या आएगा? 1 by 10x आएगा, है क्या नहीं? So even though sometimes these things, yeah, tell me. How should we know that whether the answer should be in constant? See, this is a constant. Why? Because it is a number. 1 by 10 is a number. 1 by x is a variable. Yes, sir. Because x is a variable. Clear? अच्छा, यहाँ पे x power 10 है, ये x is a variable. Here 10 is a constant. If 10 is a constant, 10 power n is also a constant. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे e power x है, e power x, e power variable है, यहाँ पे variable है. But e power 10 में e भी एक constant है और e power 10 भी एक constant है, तो constant बाहर निकल जाएगा. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, so there are two key corrections. Any other correction in the paper? Sir, question 17 and 18. No correction. मतलब I have some Question doubts. 17 and 18. Question 17 and 18. So this is question 17. Log of xyz. Log of xyz. That means log of x into y into z, right? Yes. So this is the base can be anything, but generally I told you if nothing is written, We take 10 yeah. as base. at the place of base, by default the base is 10. Are you getting my point? If you just Yes, see sir. somewhere, you have to understand that by default, if nothing is mentioned, the base is 10. So anyway, it doesn't matter here if the base is 10 or not. So what is log of xyz? It can be log x plus Log Log y plus log z. z. log z, or it can be log of x into log of yz, or it may be log of xy into plus log of z, or it may be log of xz plus log y. Do you agree? All these are correct. Yes. Because you can take factors as any factor. xyz you can write as x into y into z, or you can write it as xy into z
or you can write it as xz into y. So all these Sir, answers. plus. Sorry. What plus? X plus Y plus Z, no, sir? No, log x plus log y plus log z. See, I'm saying x, y, Ji, z sir, ji, sir. x into y into z, or I can write it as xy into z, or I can write it as x into yz, or I can write it as xz into y. You are getting my point? So xyz can be written in all these Yes, sir. ways, and log, when you apply log, you can separate it accordingly. So here in this question, your answer is this thing, all of the above. Why? Because A is also correct, B is also correct, C is also correct. You're getting my point? Yes, sir. And question number 18 is very easy, na? What is question number 18? He is asking the derivative of one expression, 5x square plus 7 by x plus 3 sin x. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Now, tell me what is the derivative of 5x square. So let me Sir, write. 10x. Let me write 10x. down. Can anyone tell me what was the thing? 5x square? Sir, plus Mm. 7 by x. Mm. The rest I don't remember. Plus 3 sin x, right? 3 sin x. 3 sin x. And you need to take the derivative of this. Now, what is the derivative of 5x square? It is 10x. 10x. What about this? 7 natural log of x, Plus? 3 cos x. So Sir, this is the answer. Yeah. sir, Yeah. 1 by x का derivative भी natural log of x होता है और No, integral भी. No. Right, you are right. This is minus 1 by x square. इंटीग्रल होता है log x, डेरिवेटिव होता है minus 1 by x square. क्लियर? सो क्योंकि x पावर minus 1 है, तो x पावर minus 1 का हुआ minus 1 into x पावर minus 1 minus 1. तो ये हो गया minus 1 by x square. Is that an error given in the exam also? Yeah. Yes, sir. So answer is none of the above. इसका आंसर है none of the above. Okay. So what all questions we corrected? Question number 18 is D. और क्या था की में error? Question 9. Question 9 is Question 9 is 35. 35. Okay. Question 9 का क्या था? Question 9 का सर C था, मतलब फर्स्ट कर रखा है सही, लेकिन C सही आंसर है. C सही है. Okay. और question number 35 का क्या है? सर question 12 का Question 12 का क्या है? C. Question 12 का C है. Correct C है. Yes sir. Okay. Question 35 का correct क्या है? Question 35 correct हुआ था? सर 35 करेक्ट ही है. 35 correct ही है. Okay. Yes. और कुछ? सर 28 का D. Question number 28 का D. तो 18, 9, 12, 28. 18, 9, 12, 28. So let us just check. 18 का none of the above है. 9. 9 का क्या है? 9 का की मिस्टेक था, √3/2 है. और 12, 28. 12 का C है. ओके. 28. 28 क्या है? 28 का भी की मिस्टेक है. ये है H, इसका है H. क्लियर? ओके. Yes sir. Any other mistake? Anybody else? Any other mistake in the key? Sir, how do we solve the integral of 1 by x? The lower limit is 3 and upper limit is 5.
That is quite simple, right? Integral of 1 by x is natural log of x. You put the limits. Lower limit is 3, upper limit is 5. So you subtract lower limit from the upper limit. So it is ln 5 minus ln 3. So what is ln a minus ln b, or ln x minus ln y? It is ln x by y. So it is ln 5 by 3. So this is your answer. Clear? Sir, 1 by 5 minus 1 by 3 would be wrong. 1 by 5 minus 1 by 3. How is 1 by 5 minus 1 by 3? Sir, natural log of 5, Yeah. it would be 1 by 5. No, how? How is natural log of 5 1 by 5? Sir, like No. natural log of x is 1 by x. Natural log of x is not 1 by x. Natural log of x is not 1 by x. Derivative of natural log of x is 1 by x. You're getting my point? Okay, sir. Okay. The derivative of natural log of x is 1 by x. You're getting my point? That's why integral of 1 by x is natural log of x. Clear? Yes, sir. Okay. Any other doubt? सर अगर 1/2x है डेरिवेटिव तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा? 2 नेचुरल लॉग ऑफ x. नहीं नहीं, अब 1 by x है क्या? क्वेश्चन में 1/2x 1 by 2x क्या है आपका? क्वेश्चन है डेरिवेटिव. यस सर. मतलब if y equals to 1 by 2x, what is dy by dx? Is that the question? यस सर. So you must ask your question like this. You shouldn't say that derivative is 1 by 2x. You should say that if the function f of x is 1 by 2x, then what is f dash of x? ऐसे पूछना चाहिए. ठीक है? Your question must be like this. If y equals to 1 by 2x, or if f of x is 1 by 2x, then what is f dash of x, or what is dy by dx? Or you can ask this question this way. What is the derivative of 1 by 2x? ऐसे भी पूछ सकते हो आप. ठीक है क्या नहीं? सर आई एम आस्किंग अबाउट इंटीग्रल. You are asking about integral. यस सर. Okay, so you are asking this. अच्छा, पहले ये देखते हैं, बाद में इंटीग्रल देखते हैं. ठीक है? इसका क्या आएगा डेरिवेटिव? dy dx of 1 by 2x. क्लियर? 1 by 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो आएगा. अभी बोलिए 1 by x का डेरिवेटिव क्या है? Natural No, log. natural log of x. No. सेम मिस्टेक मैंने किया था अभी. Yes, sir. ठीक है, that is very common because see mostly we come across integral of 1 by x log x है, integral है log x, not derivative. Derivative है minus 1 by x square. So this is your answer. Everybody gets confused with that क्योंकि इंटीग्रल फाइंड कर रहे हो, फिर सडनली डेरिवेटिव पूछ लिया तो इंटीग्रल का आंसर दे दिया. ओके? So Sir, yeah, in previous one, sir. which one? This one? Previous one. This one? No, sir. Yes, more previous now. Yeah. थोड़ा और ऊपर, sir. अच्छा, क्वेश्चन क्या था बोलना? क्वेश्चन को 10x में कौन सा सर x स्क्वायर को 10x में कन्वर्ट. सर 5x नीचे चला गया वो. इधर. थोड़ा और नीचे सर. हाँ यार. अच्छा. हाँ सर. हाँ हाँ 5x स्क्वायर का 10x कैसे हुआ? जी सर. 5 तो कांस्टेंट है. जी सर. ठीक है, x स्क्वायर का 2x है तो 5 into 2x हो गया 10x. ओके सर. ओके. इधर 7 कांस्टेंट है, 1 by x का minus 1 by x स्क्वायर है तो हो गया minus 7 by x स्क्वायर. इधर 3 कांस्टेंट है, sin x का क्या है cos x तो हो गया 3 cos x. तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा whenever it is in the form of a this thing. Now someone asked me this question. अभी मैंने डेरिवेटिव किया 1 by 2x का. You are asking what is the integral, right?
आपका Yes, sir. आपका क्वेश्चन ये है ना, तो अगेन कांस्टेंट Yes, sir. बाहर आ जाएगा, तो 1/2 कांस्टेंट है यहाँ पे, 1/2 बाहर आ गया, यू जस्ट डू इंटीग्रल ऑफ 1/x, तो आ गया क्या 1/2 टाइम्स ln x प्लस c इज योर आंसर. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, so let us just write it in different color. Okay. Sir, Yeah, tell me. Any other doubt? if only 1/2 would be there means, sir? Only Yes, sir, if 1/2. only 1/2 would be there means? You want integral? इंटीग्रल Yes, sir. हाँ, तो इंटीग्रल ऑफ 1/2, तो अगेन क्या आएगा 1/2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 dx. तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1? टेल मी. 1/2 व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1 इज x प्लस c. क्लियर? इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है? x है क्या नहीं? जी sir. तो आ Yes, गया sir. 1/2 x प्लस c. एनी अदर डाउट? Sir, what is the log of 4 to the base root 2? log ऑफ 4 बेस रूट 2 है आपका, ठीक है. जी. तो आपका log है 4 है और यहाँ पे है रूट 2, ठीक है. तो यू कैन जस्ट राइट 4 एज रूट 2 पावर 4. डू यू एग्री? Yes, sir. रूट 2 टू द पावर 4, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स आगे आ जाएगा ये. Yes, sir. तो क्या आ गया आपका 4 Into log 1. रूट टू टू द बेस रूट 2. तो अगर बेस और नंबर सेम है तो आपका लॉग आएगा 1, तो आपका आंसर है 4. सर 4 है ना? इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में इसका आंसर 8 दिया है. इंटीजर टाइप. एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21. 21. अच्छा, आप एमपीसी के हैं? जी सर. क्वेश्चन नंबर 21 इंटीजर टाइप में. अच्छा, दिस शुड बी 4 राइट? यस सर. सो ये भी एक करेक्ट करा लो आप. आपका है एमपीसी कौन सा है आपका क्वेश्चन? सर 21. 21. क्या है आंसर आपका? 4. सर 4. यस. 4 है. सो जस्ट नोट डाउन दिस करेक्शंस. ओके. सर और ये कहिए क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 23. न्यूमेरिकल जी. क्वेश्चन नंबर 23 ये वाला. ई पावर 7 का डेरिवेटिव क्या है? पावर 7. सर इसका 0 है. 0 है. 5x का डेरिवेटिव क्या है? सर इसका 5. और 4 का? सर ये तो ऐसे दिया ही नहीं है. सर कुछ क्वेश्चन मार्क्स डाले हैं इस पे, मुझे नहीं आया. कहाँ पे? सर इसने क्वेश्चन में 4 के साथ क्वेश्चन मार्क दिया है, वो उल्टा. नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ब्रैकेट है ना वो. नहीं Yes, sir. In question number 33 also for physics, we have सर यही कंफ्यूजन हो गए इससे. ulta question mark is there, sir. Question number 33, sir. If you can see. Can you one second? Is that question paper shared in the group? No, sir. It is in the app. It's in the app. Can anyone share the screenshot once? In the group, sir. Take screenshot. No. Yeah, in the group. Sir, we cannot take screenshots in that app. Okay. Can anyone take the photo? Sir, can Sir, I I- join yes, from? Sorry? Sir, can I join from mobile? Then I will share my screen. Yeah, sure, you can. So that I think you are talking about some encoding error
in the application, I think. Sir, question Right? number 33, sir. If you can. Yes. 33. Question number 33. 34 also is like that only. Yeah, let me check. Actually, I didn't use that app. I should. Sir, there's an upside down question mark between the texts. No, that means that is encoding error. So Might be. we'll see from the next time. Okay. Anyway, I will check that when someone gets it a screenshot. So we'll Sir, continue. can I join? Sir, can I share? Yeah, if you want, you can share. But it should be visible if you share. I don't know if that app allows to share or not. Okay, one share. Question. Is it visible to you? Yes, sir. I think it's not sharing. So No, sir, the it's app not doesn't, visible to us. the app doesn't allow, I think. Okay, anyway, I'll check that and I'll come to that later. So let us continue here. Okay. Okay, we'll continue. I'll just check that later. Okay, anyway, so Sir, shall I send it on WhatsApp? yeah, you send it. So anyway, we'll look into that. But let me just continue here. We'll cover some concepts and then. Sir, I have just sent it. You can check it. That is encoding error. Yes, that is encoding error. So for this question, bonus must be given. Okay, we'll just look into the bonus and key corrections after the class. Okay, we'll have some discussion on the group. Clear? So this question will be awarded bonus. That means everybody will get marks for this question. Sir, after this also we have the same problem. Next question also. Only two questions. I think so. Okay, just go through that later. We'll discuss about that later. Okay. Okay. All the errors and all will just take care later. Okay, now let me just continue. So we learned so many things now. We learned, we revised concepts of angles. We saw a bunch of things about coordinate geometry. And I assume you all know how to solve quadratic equations. That also I discussed, right? Yes, sir. Yes, sir. In the beginning, we saw where we got that formula of minus b plus or minus b square minus 4ac by 2a. That is, by completing the square, we got that. Okay. And then what else did we see? We saw the concept of slope. Okay. We saw trigonometry. Now in trigonometry, we learned trigonometric ratios of some important angles. We also learned trigonometric ratios of angles greater than 90 for the first time. And we saw where the trigonometric ratios are positive, where the trigonometric ratios are negative, based on all silver teacups. And what happens if you have 90 plus theta, 90 minus theta, 270 plus theta, 270 minus theta? What happens if you have 180 plus theta, 180 minus theta, 360 plus theta, and 360 minus theta? We have seen it along with the proofs, right? Okay. After that, we learned some
equations based on trigonometry. What equations do we learn? We first learned trigonometric identities. We learned after that what is sine of a plus b, what is cos of a plus b, what is tan of a plus b, what is sine of a minus b, cos a minus b, etc., etc. Sine 2 theta, cos 2 theta, and so on and so forth. Many relationships we have seen. We have also seen what are the rectangular components of a vector. We have seen, right? What are the rectangular components of a vector? For example, if we have this vector r bar, we have this vector r bar. The rectangular components, this is called horizontal component, and this is called vertical component. vertical component, because in coordinate system this is horizontal and this is vertical. So this is the vertical component. Clear? Now horizontal component is given by x and vertical component is given by y, and if this angle is theta, okay, if this angle is theta, what is x equal to? Sir, x or cos theta X equals to r cos theta, R and y equals to r sin theta. R sin theta. y equals to r sin theta. We have seen. Now how can we find x and y? If r comma theta Given. R and theta are given. 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 r and theta are given, we can find x and y. Clear? Yes, And sir. we can do the other way around also. If x and y are given, tell me what is r equal to? R equals to So root of x square plus y square. root of X square plus Square plus y square. square plus y square, right? And how to find theta? How to find theta? Can you hear me? Yes, sir. How to find theta? Can you see tan theta equals to y by x? Yes, sir. And theta. Tan theta equals to y by x, because y and x are given, so I have to somehow relate y and x. What is theta equal to? Tan inverse of y by x. I by x. y by x. y by x. So we have seen this. Okay. Now we will proceed with this in vectors. So we'll proceed with this in vectors. So we'll study about vectors later, what vectors are and what are the properties of vectors, how to represent vectors, lots of things about vectors we'll learn. Okay, how to solve problems based on vectors. Now before that, I would like to enter into kinematics. Now what is kinematics? Tell me. Acha, after trigonometry, what did we learn? We Sir, learned calculus. Calculus. now in calculus there are two major branches, obviously. One is how to Differential. find the derivatives and one is how to find the integrals. Okay, so we have seen how to find derivatives and how to find integrals. We also saw what the meaning of derivative is and what the meaning of integrals is. Correct? Do you Yes, sir. agree? So tell me, what is derivative? Derivative is nothing but slope of a function. And what is integral? Integral is nothing but area under Area the of a graph. Okay, fine. Now let me tell you something. Now what is rate of change of displacement? Acceleration. Or velocity. Velocity, sir. Okay, velocity. Let me just before that, let me just tell you something. When you say rate, what do you mean by rate in general life? When you say rate, Sir, with respect to time. With respect to time. no, not with respect to time. I'm not talking about physics or science. In generally, in daily life, when you say rate, Price. So price. Amount. Surprise. rate is per price per something. Generally,
It is price per something. For example, Yes, rate sir. of petrol is 100 rupees per liter. Per liter. Yes, sir. So what is that 100 rupees? It is the price you have to pay per how much? Per a unit volume. Or that unit volume is liter. Okay. When you say rate of rice is say I think 40 rupees. So Yes. 40 rupees for what? It is per kg. Per Per kg. kg. Okay. For example, if you are going to buy bananas and he says that the rate of bananas is 50 rupees per what? Per dozen. Dozen is a Per unit. dozen. Okay. So rate is per something. But in physics, rate is always per unit time. So in physics, whenever you hear this word rate, he's always talking about what? He's talking about per unit time. Clear? Are you getting my point? Now, Yes, sir. you are starting your journey from point A or from town A. From town A, you are starting your journey. And you are ending your journey at town B. You are ending your journey at town B. Now you are starting, suppose you are starting this journey in a bus. Now it will take some time to reach from town A to town B. Do you agree? Yes, sir. So it will take some time to reach from town A to town B. Now without time elapsation of time, you cannot reach from town A to town B. Are you getting my point? Suppose the distance is 80 kilometers. Okay, distance is how much? 80 kilometers. So kilometers is written like this. What do you mean by kilo? Kilo means 1000. Meters means meters. So kilometer means 1000 meters. Are you getting my point? Now the Yes, sir. time taken to do this journey is 2 hours. Time taken is how much? 2 hours. Now, if I say what is average speed, what is average speed? Average speed of the journey. Tell me, what is the Total average? distance covered by total time. 40 kilometers per So hour. whenever I say average speed, I'll write it as V average equal to total distance, By total time. total time taken, total time taken. This is average speed. Now tell me what is total distance here? 80 80 kilometer. 80 kilometers. 80 kilometers, capital K, small m. And how many hours? It is 2 hours. 2 hours. Into H, because H is the short form for hour. So tell me, 40 what is kilometers average per speed? 40 40 kilometer per hour. kilometers per hour. 40 kilometer per hour. So average speed is how much? 40 kilometer per hour. V average is 40 kilometer per hour. I can write it like this, 40 kilometer per hour. Clear? Yes, sir. Now, whenever I say average, you have to do total distance by total time. You are getting my point. So, Yes, sir. whenever I say V average, it is total distance. Total distance I'm writing as total distance. I'm writing as delta S. So, whenever you see delta in physics, whenever you see this symbol delta, delta is change. Delta is change Change. by delta t. By delta t. So whenever you see this delta, this is what this is. Let me just write down. This thing is what? This thing. This is called delta. Delta represents change. Do you agree? And what does D represent? So small change. Yes, represents small change. Small change.
Now let me tell you that these are all Greek alphabets. These are all Greek alphabets. Even the English alphabets are mostly derived from Greek and Latin. Okay. So this small d is small d in Greek. Capital D is this delta is capital D in Greek. Okay. So all these are Greek and Latin alphabets. Now, especially if you study the subjects of physics, chemistry, and biology, most of the words are derived from Latin, Greek, and some of the words are derived from Arabic. Okay, because these were the civilizations that studied the subject of science in their peak. When they were in their peaks, they used to hold the torch of this subject. Okay, subject of science, philosophy, and all. So most of the words you deal in biology also, the words of in taxonomy, if you look at the names of the species also, they are all influenced by Greek mythology. You are getting my point? Okay. Yes, Anyway, Greek. so for example, Carl Linnaeus named the organism Hydra because when Hydra sheds part of its body, a new organism is born. So that story is influenced by the story of Hydra, which is killed by Hercules in one of his labors. So that kind of influence they have, Greek mythology has. So anyway, so this is what average. But what is instantaneous speed? What is instantaneous speed? So speed at an At particular particular instant. point. So by name, you can just understand that it is speed at any given instant. Speed at any given instant. Speed at any given instant. Now, tell me, these people have made the total journey with an average speed of 40 km per hour. Can you see? Yes, Okay. sir. Their average speed is 40 km per hour. Now, tell me, is the bus traveling with 40 km per hour throughout its journey from the start to end? No, sir. No. No, No. obviously, nothing can travel like that. Nothing can get from 0 to 40 instantaneously and then make all its journey at 40 and suddenly stop. That is not possible. So how will the bus travel? It will start at 0. It may reach the speed of 100 also. Do you agree? Yes. For some time it can go with a speed of 60. Sometime in between it can stop also, so, if required. That means in between the speed may go to 0 also. So speed will be what? Speed will be variable. You are getting my point. Speed Yes, will sir. be Yes, sir. variable. Yes, sir. Yes, sir. Speed of a bus will be variable. Now at any instant, the instantaneous speed of the bus can be given by what? In real world, tell me, आपको कहाँ बताएगा instantaneous speed बस का क्या है? किधर दिखेगा? So on the speedometer. speedometer. Very good. Speedometer. Example, for a bus or an automobile, its instantaneous speed, it's instantaneous speed is the speed shown by its speedometer. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So at any given instant, speed may be anything. Speed may be anything. It may be 0 km per hour. It may be 100. 40 km per hour. It may be 100 km per hour. It may be 20 km per hour, and so on, etc. But later you will realize, math people will realize, there is a theorem called,
average value theorem, and so many theorems are there, that if average speed is 40, if average speed is 40 km per hour, then now everybody will understand this through common sense. Then instantaneous speed must be greater than 40 km per hour at some point of time or the other. At some point of time or the other. Are you getting my point? Yes, sir. देखो, अगर एवरेज 40 है तो कभी ना कभी तो 40 से ज्यादा गया होगा. अगर कभी 40 से ज्यादा गया ही नहीं तो एवरेज 40 कैसे होगा? ठीक है, समझ में आई बात? यस सर. Yes, sir. अगर कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड 40 से आगे गया ही नहीं तो एवरेज 40 नहीं आ सकता. फॉर एग्जांपल क्लास का मार्क्स है, सब बच्चों के मार्क्स आ गए, ठीक है, 100 का टेस्ट था, 100 मार्क्स का, सबके अलग अलग मार्क्स आए. अगर किसी के मार्क्स 70 के ऊपर गए ही नहीं तो एवरेज 70 हो सकता है कभी? नो सर. नहीं हो सकता ना. अगर एवरेज मार्क्स क्लास का 70 है तो किसी ना किसी स्टूडेंट का 70 से ऊपर तो गया होगा 100%, है क्या नहीं? Yes, sir. Now let me give you example. कैलकुलस कैसे काम आएगा हमको? कैलकुलस कैसे काम आएगा? Suppose velocity speed as a function of time is given of a particle. So I am writing speed of a particle is given by the following function. तो आपका स्पीड ऑफ ए पार्टिकल v of t is given by 3t square minus 70 plus 3. Are you getting my point? ये स्पीड ऑफ ए पार्टिकल है. आपको समझ में आया क्या है? It is a function of time. यस. Are you listening? Now tell me, according to this, I'll ask you bunch of questions, you tell me. I'll ask you bunch of questions. What is initial speed? Initial speed. सर Now, 0. हाँ 3 होगा. मैं बोलता हूँ, जब भी इनिशियल आप वर्ड सुनोगे फिजिक्स में तो हमें टाइम 0 लेना पड़ेगा. हाँ, जब भी इनिशियल वर्ड सुनोगे आप, whenever you hear this word इनिशियल का मतलब आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, t equal to 0. ठीक है? What do you mean by t equal to 0? टाइम 0 तो टाइम. हाँ, टाइम t is equal to 0 का मीनिंग ये है कि when you start your observation, टाइम to 0. समझ गए? ठीक है? Now initial मतलब what? The quantity when you start observing, that is initial. समझ गए? यस सर. Initial की मीनिंग क्या है? When you start your observation, and when you start your observation, t equals to 0. अब मेरे को बोलो इनिशियल स्पीड क्या होती है? इनिशियल स्पीड 0. Initial speed is it is v of 0. It is v of 0 which is equal to 3. v of 0. v of 0 क्या होगा? Let us see. 3 v square minus 7 into 0 plus 3. क्या आ गया? 3. आ गया. अच्छा, यहाँ पे यूनिट्स भी देगा. मैंने दिया मीटर पर सेकंड. ठीक है? अगर किलोमीटर पर आवर देगा तो किलोमीटर पर आवर लेंगे, पर मैंने यहाँ पे दिया मीटर पर सेकंड
और यूनिट सबके लिए वैलिड है, तो यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकेंड। तो बोलना क्या है, आंसर क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। हाँ सर इनिशियल स्पीड हमेशा मतलब t 0 क्यों होगा स्टार्टिंग में? इनिशियल का मीनिंग है फिजिक्स में t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा मैं। सर तो हो सकता है ना कि वो बीच में स्टार्ट करे, जब कार की स्पीड 40 हो जाए तब वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करे। हाँ इसीलिए तो 3 आई ना, हमको 0 नहीं आई ना, इसीलिए तो 3 आई। So it will depend upon the equation. It will depend on the equation. It will depend on the equation. But sir, naturally, normally initial speed and initial time will be 0 only, na? See, initial वो होता है जब आपने आंख खोल के देखना शुरू किया, Start करें। ठीक है? जी। Initial मतलब क्या? When you started looking. So when you start looking at a particle, the particle need not be at rest. It may be कि आपने आंख खोली कुछ देर के बाद, है क्या नहीं? Yes. For example, Earth is rotating with some speed around the sun. Do you agree with respect to sun? Yes. अगर सन के फ्रेम से देखोगे तो अर्थ कुछ स्पीड से रोटेट हो रही है। Now, if you start observing, आप तो पैदा नहीं हुए थे जब ये स्टार्ट हुआ, अर्थ फॉर्म हुआ, तो आप कहीं ना कहीं से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करोगे ना। तो जरूरी नहीं है कि जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया अपना तो अर्थ वाज एट रेस्ट, इट इज ऑलरेडी मूविंग व्हेन यू स्टार्टेड योर ऑब्जर्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. Now tell me, what is the speed of the particle at t equals to 2 seconds? At t is equal to 2 seconds. ठीक है? So let us see. So t is equal to 2 seconds मतलब क्या? We are finding v of 2. v of 2 क्या है? Distance by time. नहीं. v of 2. Speed at 2. This is speed na? 3 into 3 into 2 square plus Minus. 7 into 2 minus 7 into 2 minus 7 into 2 plus 3. कितना है? 12 minus 14 plus 3. 1. 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया? Okay. What is speed at 4 seconds? V of 4 is equals to 3. so So v of 4 Let us see. V of 4 equals to 3 into 4 square minus 7 into 4 plus 3 कितना आएगा? 16 48 minus 24 plus 3 48 minus 24 plus 3 27। अच्छा, ये सारे क्या है? ये सारे जो 27 था। हाँ, कितना? 27 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? अच्छा, ये सारे क्या है? ये सारे इंस्टेंटेनियस स्पीड्स है। क्या है? जी सर। instantaneous ये सारे जो है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड्स है। कब है? With relation with time only. हाँ, t equal to 0 पे, t equal to 2 पे, t equal to 4 पे. What are these? These are all instantaneous speeds. The speeds calculated above are all the speeds Instantaneous. calculated above are all instantaneous speeds. Do you agree? है क्या नहीं? सर ये जो इक्वेशन है ये क्या शो करती है? 3t square minus 7t plus 3। So that is how the particle is moving. The particle is obeying this equation. समझ गए? मैं बताता हूँ। ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही होगी। बोलना क्या है इक्वेशन? 3t square 3t square minus 7t plus 3 एक मिनट, 3t के बदले मैं यहाँ पे x लूंगा, बट समझ जाइए कि 3 है। समझ गए? हाँ, माइनस 7x
70 बोलना आप, मैं लिखूंगा x, हाँ, प्लस +3 3 +3। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल x है इसलिए x में क्या, बट एक्चुअली यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज t, ओके। So let us put the okay. So this is how the particle is moving. तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 0 पे कितनी आई थी स्पीड हमारी, 3 सर। तो यहाँ पे भी जब x एक्सिस पे 0 है, दैट इज टाइम t इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पे इसका स्पीड है, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो ये x एक्सिस पे आपका टाइम है और y एक्सिस पे क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो अभी आप बोलिए मेरे को कि स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू 0 है, जब स्पीड कितनी आई आपकी? 3 है सर। नाउ दिस पार्टिकल इज स्लोली डिक्रीजिंग इट्स स्पीड, और इसकी स्पीड इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, फिर नेगेटिव स्पीड पे जाएगी, मतलब पीछे की तरफ जाएगी ये पार्टिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे पीछे की तरफ जो है ना हाईएस्ट स्पीड पे जाएगी, फिर यहाँ पे नेगेटिव स्पीड कम हो जाएगी, फिर ये रुक जाएगी कहीं जाके, रुकने के बाद फिर से पॉजिटिव स्पीड इंक्रीज होते जाएगी इसकी, फिर इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन दैट दिस पार्टिकल इज फॉलोइंग। समझ में आया आपको? सर एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या डिस्टेंस दिखा रहा है? टाइम, एक्स एक्सिस टाइम है। टाइम हमेशा फिजिक्स में एक्स एक्सिस जनरली टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वाई एक्सिस कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, वो डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता है, एक्सेलरेशन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, फोर्स भी कर सकता है, बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है। सर हाँ। सर एक बार फिर से प्रिंट करिए ना ये जरा। देखो एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे स्पीड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ना आपका, वो रिलेट करता है कि कौन से टाइम पे कितनी स्पीड है पार्टिकल की, ठीक है। ओके सर। तो इनिशियली स्पीड इतनी आई 3, और कब कैलकुलेट किया था हमने? 3 सेकंड्स पे किया था, 2 सेकंड्स पे किया था, 2 पे किया था, यस सर। तो 2 पे किया 1 One. दिखाई दे रहा है आपको? कैन यू सी 2 पे कितनी आई स्पीड? 1। यस सर। एंड और पे कैलकुलेट किया 4 पे, 4 पे किया था 27 नहीं, कौन सा टाइम पे किया था? सर 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स पे किया था। तो देखते हैं 4 सेकंड्स पे क्या है, तो बहुत दूर है 4 सेकंड्स का। हाँ देखो 4 सेकंड्स पे किधर है, देखो 4 सेकंड्स इधर है। 4 सेकंड्स पे कितना आया था? 27 मीटर पर सेकंड। 27। एक सेकंड, 4 सेकंड्स पे क्या, कहाँ गया 4 सेकंड्स पे? 27 है। 16 into 4 is 48, 7 4s are 28 है ना यहाँ पे? यस सर। सर इट वुड बी 23। 23 सर। It will be 23. Okay. So let us see. देखो क्या है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आपको? 4 सेकंड्स पे दिखाई दिया? जी सर। So if you see this is 23. Can you see? Okay, clear? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो वो रूट्स क्या क्या शो करेंगे? वो जहाँ पे स्पीड आपकी 0 आएगी। ओके सर, ओके। Okay, anyway, I'll discuss a lot of this equation. फिर से बोल रहा हूँ, what is v of t? What is v of t 3t square minus 7t plus 70 plus 3? Okay, we will discuss a lot about this. We'll discuss a lot about this equation. तो ये क्या Sir, कहता है? which chapter sir? This is kinematics, motion in one dimension. This is Motion in one dimension. motion in one dimension. Okay, so I'm starting this chapter because see, actually before this there is one more chapter called units and dimensions. Okay, that's a boring chapter, so that's why I want to cover that later, and not a big problem. It will not affect your
this thing. So I'm just starting this motion in one dimension. Clear? So this motion in one dimension in your school you had by the name of kinematics, maybe for some people. Remember? Yes. Yes, Or sir. maybe for some people it is just motion, Yes, it was motion for me, sir. and for Yes, sir. some people it was by the name of equations of motion also. But you just studied uniform motion in your this thing. Anyway, we'll look at everything. Don't worry. Now this is the equation. किसका equation है बोलो? किसका equation है? V of t किसका equation है? Sir, velocity with respect time. Velocity और speed I can say. Speed with respect to time है. ठीक है? Speed as a function of time है. अच्छा, अब आप t डालोगे, V of 2 डालोगे तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? Sir, वो one. Instantaneous speed at t is equal to 2 seconds. Do you agree? Yes. V of 10 करोगे तो क्या आएगा? Instantaneous speed at t equals 10. Instantaneous speed at t equals to 10 10 seconds. Okay, fine. अच्छा, V of 0 डालोगे तो क्या आएगा? 3. Sir, initial speed. Instantaneous speed 3. 233, I think. at t equals to 0 seconds. Agreed? Yes, sir. Which is also called what? Initial speed. This is also called, Sir, how will get 0 for 0? It will be 3, right? yeah, it will be 3. See, this will be 3. This will be 1. This will be something. Let us see what it, at t is equal to 0. You are getting my point. I am not writing v equal to What 0. time? T equal to 0. समझ में आया? हाँ, okay, sir. Okay. यहाँ पे लिखा क्या मैंने? t equal to 0 लिखा, v equal to 0 थोड़ी ना लिखा. जी t जी. is equal to 2. t is equal to 10. t is equal to 0. 0. Clear? अच्छा, Yes, sir. ये सारे क्या है? इनिशियल इंस्टेंटेनियस स्पीड्स है. ठीक है? नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. सी केयरफुली. v of t कितना है? फिर से बोलिए. 3t square 3t square minus 7t plus minus 3. 7t plus 3. अच्छा, what is v? v is ds by dt. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. मतलब it is rate of change of distance traveled. तो ds by dt है वो. ठीक है? तो can I write ds by dt as 3t square 3t square minus 7t plus 3. plus 3? Can I write? Okay? तो ds क्या आएगा? बोलो ds. Sir, 6t minus 7. Plus 3 into dn. Into dt. अच्छा अच्छा. तो आपने डेरिवेटिव निकाला. डेरिवेटिव नहीं, क्या चाहिए हमको? This, इंटीग्रल. sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे 0 लगा है तो यहाँ पे भी 0 लगा. क्यों? Sir, why do we need integral here? क्योंकि आ गया यहाँ पे इंटीग्रल. देखो आपको क्या आ गया यहाँ पे? इधर ds आया, उधर dt आया. जी. Now I wish to calculate s. I wish to calculate. S. तो दूसरे कलर में लिखते हैं. So I It wish will to be t square minus 70 plus 3 whole I wish to calculate dt by s. T. s of t. s as a function of time. ठीक है? Okay. तो मेरे पास ds है, s चाहिए तो क्या करूं मैं? बोलो. इंटीग्रेट करूंगा. हाँ. इंटीग्रेट करूंगा. और जी. इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 होता है हमेशा. हमेशा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0. क्लियर? Yes, sir. देखो इनिशियल पोजीशन 0 होने की जरूरत नहीं है, बट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है हमेशा. ठीक है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? कितना मूव हुआ. अब जब आपने स्टार्ट किया देखना, जब तो मूव हुआ ही नहीं ना, तो इनिशियल Yes, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है. ये इनिशियल टाइम 0 लेते हैं.
तो 0 पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। अच्छा, बाद में s हो जाएगा, इसका टाइम बाद में t हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नाउ टेल मी व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1। यहाँ पे तो 1 है, दिखाई दे रहा है आपको 1? सर एस। s, वेरी गुड। लिमिट डालो 0 to s इक्वल टू 3t स्क्वायर का बोलना क्या है इंटीग्रल? 3t क्यूब बाय 3 मतलब t स्क्वायर 3t t क्यूब। हो जाएगा, टी क्यूब सर, टी क्यूब। t क्यूब 3 by 3 t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3t क्यूब बाई 3, और वी कैन से t क्यूब का डेरिवेटिव है 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर का इंटीग्रल है t क्यूब, ठीक है। यस माइनस 7t स्क्वायर बाय 7t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x 3t 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 फ्रॉम 0 to t सब पे लगेगा, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या आएगा? s इक्वल टू, बोलिए, 3t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t। 3t, है कि नहीं? जी सर। आपको आ गया क्या? s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना है? 3t का क्या है? t क्यूब है सर। ना? 3t क्यूब क्यों हो गया? हाँ वही t क्यूब है, t क्यूब है। ओके बोलो, t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आई बात? ओके, समझ में आई बात? यस सर। देखो Yes. क्वेश्चन में गिवन क्या था? v ऑफ t इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 था। उससे मैंने क्या फाइंड किया? क्या फाइंड किया? ds by dt. s फाइंड किया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। s फाइंड किया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। Time. s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड किया मैंने, तो मेरे को क्या आया? ये आ गया एक्सप्रेशन s का, ठीक है। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, now using this formula I can answer one more question. I can answer this question कि एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। अगर वो बोला कि एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? Total distance And then time. by total. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टोटल टाइम इंटरवल देना चाहिए, वो क्या देना चाहिए? टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल, इन द टाइम इंटरवल। अब बोलना कुछ टाइम इंटरवल। सर 4। 4 नहीं, minutes. टाइम इंटरवल मतलब क्या? स्टार्टिंग पर टाइम देना है, एंडिंग टाइम देना है। t इक्वल्स टू 0 टू 4 4 t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपने पूछा कि 0 से लेके 4 तक एवरेज स्पीड क्या है, तो आप कैसे करोगे? तो इट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट Total time. by total time, by total time. Now the thing is, total time is very easy. बोलो टोटल टाइम क्या है? 4 seconds. 4 4 minus सेकंड। 4 minus second. 0 बोलो। लेट अस जी सर। ओके, 4 minus 0, ओके। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या लिखो? s of 4 minus s of 0, ठीक है। यस सर। s of 4 कितना आएगा? 3 इंटू, नॉट 3 इंटू, सॉरी। देखो s का फॉर्मूला क्या है? t क्यूब, दिखाई यस दे रहा सर। है आपको? माइनस 7t स्क्वायर बाय 2 4 प्लस क्यूब 3x। माइनस 7 बाई सर वीडियो नहीं आ रहा। 2 4 स्क्वायर Sir, unable to see what you are writing. प्लस 3 इंटू 4। बोलो, सर वीडियो स्टॉप हो गया। unable to hear you, just tell me again. Sir, what you are writing, we can't see, sir. यस सर। So it's paused. Can you type?
Now? Yes, sir. Yes. सर आप आ गए. Just give me a second. I think we have, Sorry, your voice is not coming.